Good morning, dear kids. I hope you all are doing well. So, today we are going to study English grammar, that is, chapter 2, the two parts of a sentence, subject and predicate. Page number 8 in your grammar textbook. As if, my dear kids, we have already studied in our last class and it was about the sentence. So, what is a sentence? Let's revise. A sentence is a group of words that makes complete sense. Is called a sentence. And a sentence begins with capital letter and ends with full stop. As if lastly I have given you some examples and we have done with the exercise. So today we are going to study about the two parts of the sentence. As if when we call that the two parts of the sentence are subject and predicate. Now you must be thinking, what is subject and what is predicate? क्या होता है ये subject और क्या है ये predicate? Let's start and let's study. Lesson number 2, the two parts of sentence, subject and predicate. My dear kids, can you just look at the pictures on page number 8 as if given? The cow eat grass. Question 2, the peacock is dancing. 3 number, the aeroplane was flying. Number 4, the doctor examined the patient. So, what does it mean? These are the complete sentence. Starts with a capital and ends with a full stop. The cow eats grass. Cow क्या कर रही थी? Grass खा रही थी. The peacock is dancing. Peacock क्या कर रहा था? Peacock is dancing. Aeroplane was flying. Aeroplane क्या कर रहा था? Aeroplane was flying. And Number 4, the doctor examined the patient. What did the doctor do? Doctor ने क्या किया? Doctor ने patient को check किया. So, in the above sentence, the person or the thing spoken about, जिस person के बारे में या जिस चीज़ के बारे में या जिस वस्तु के बारे में बोला जाता है, उसके बारे में बताया जाता है, उसे कहा जाता है subject. And what is said about the person or thing? जिस सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है उसके बारे में जो बताया जा रहा है, what is said about the person or thing is called predicate. As if the cow eat grass. आप देख सकते हैं कि the cow को हाईलाइट किया है ब्लू शेड से. The peacock is dancing. The peacock को हाईलाइट किया गया है. The aeroplane was flying. The aeroplane को हाईलाइट किया गया है. The doctor examined the patient और the doctor को हाईलाइट किया हुआ है. The sentences which are been highlighted, तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये बात की जा रही है about a person or the animal or the thing. So जिनके बारे में बात की जाती है, the person, the animal or the thing spoken about in a sentence, यानी जिस sentence यानी जिस वाक्य में जिसके बारे में बताया जा रहा है या जिसके बारे में बात की जा रही है, the first part of the sentence is called subject. As if the cow eats grass green color से highlighted है. The peacock is dancing green color से highlighted है. The aeroplane was flying green color से highlighted है. As if question number 4 में the doctor examined the patient is highlighted with the green color. Okay, so ये जितने भी ग्रीन हाईलाइटेड पार्ट है, सो व्हाट डज इट से? ये बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा था. व्हाट वाज द सब्जेक्ट डूइंग? सो व्हाट इज सेड अबाउट द फर्स्ट पार्ट, यानी फर्स्ट पार्ट क्या था? सब्जेक्ट. सो व्हाट इज सेड अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस. तो ये जो सेकेंड पार्ट है उसको कहा जाएगा प्रेडिकेट. बेसिकली सब्जेक्ट जो है जिसके बारे में बताया जा रहा है, दैट विल बी सब्जेक्ट. एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस की सब्जेक्ट क्या कर रहा है, तो सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा जो बता रहा है उसको कहा जाएगा प्रेडिकेट. दैट विल बी कॉल्ड एज प्रेडिकेट. द पर्सन, द एनिमल, द थिंग स्पोकन अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट. व्हाट इज सेड अबाउट द पर्सन, एनिमल, द थिंग इज कॉल्ड प्रेडिकेट. सो नाउ इन question number A, divide each of the following sentence in two parts. The person, the animal, the thing spoken about, and what is said about the person, animal or the thing, subject and predicate. The first one is done for you
एज इफ द फार्मर प्रोड्यूसेस फूड फॉर अस. फार्मर क्या प्रोड्यूस करता है? फूड. किसके लिए प्रोड्यूस करता है? हमारे लिए. प्रोड्यूसेस फॉर अस. सो what will be the subject here? The subject is the farmer. And what will be the predicate? हमें ये बताना है कि जो फार्मर है, जो सब्जेक्ट है, वो क्या करता है? वो फूड प्रोड्यूस करता है. किसके लिए? हमारे लिए. सो द प्रोड्यूस फूड फॉर अस इज predicate. So this way you have to complete exercise A and exercise B. Question number B is fill in the blanks with the first part, subject of the sentence. Take the help of the pictures. Now the pictures are given as if dash is watering the plant. The gardener is watering the plant. Dash is sleeping. The child is sleeping. So you have to complete this fill in the blanks putting the correct subject looking with the picture. Picture देख के आपको correct subject को इसमें put on करना है. Okay. Then next is the question number C, that is fill in the blanks with the second part of the sentence, that is predicate. Take the help of the pictures. The stars dash. The stars shines. The star shines. So what does the star do? Star क्या कर रहा है? Shine करता है. The children are praying. Children क्या कर रहे हैं? Praying कर रहे हैं. So the second part is called predicate. So you have to take the help of the pictures and complete the exercise A, B and C. The solution will be shared with you in the evening. Okay my dear kids, if any doubt then kindly do contact us and do watch the videos and understand the explanation. If any further doubts you can contact us. Thank you. Take care.